Hello, Dr. Swati. Am I audible to you? Yes, very well. Great, great. How are you? How are you doing? Yeah, I'm great. Thanks for having me. The Healthy Indian Project. I wish everyone a very happy New Year. Same to you, Dr. Swati. Um, so I've already given your introduction to our viewers. Yeah. Um, I have a small message, I have a short message for our viewers. Is that if you have any questions of your own about understanding food labels, please share them in the chat. Once I'm done with my questions, I'll take up yours. Dr. Swati, अगर आप थोड़ा सा कैमरा, हाँ, yes, great. So, shall we begin? Yeah. Yes. Okay. What key information should people with diabetes look for on food labels to make informed choices about their diet? Okay. Key information. So, to begin with, in this time of OT, means overeating time to time. Like 3 of us, you, me, and all my neighbors, take a restart from zero से restart about knowing everything about carb that is mentioned in different name under every food which we are going to purchase on Dr. this. Swati, your voice is breaking actually. बीच बीच में थोड़ा सा. Okay. Hello. हाँ हाँ जी. Please tell me. So, key information that I would like to share with you all is one should concentrate on the आगे नहीं पीछे से read करो all the food labels which shows the serving size of the product, how many servings particularly in the product, type of carbohydrate, total carbohydrate, the fiber content, the fat content, and very important protein content of all products. So that is the key information one should know about reading the food information given or the food label given on the ingredient list of any food product that we are going to buy. Okay. So how can people with diabetes differentiate between various types of carbohydrates listed on food labels, and why is it important? Carbs. Carbs are everywhere. See, if the product is free, sugar free, it doesn't mean it's carb free. So you have to be very conscious in buying the food products regarding carbohydrate. Carbohydrate is a very big spectrum which includes both complex carbohydrate and the simple carbohydrate. But to sum up the carbohydrate, we should know the total carbohydrate content in a particular food product, the simple carbohydrate, the added sugar, the starches, the fiber, and the names which are written are the hidden forms of sugar like corn syrup, dextrose, fructose. All these are types of carbohydrates which we should try to have as less as possible. Okay. Are there specific ingredients or additives that people with diabetes should be cautious about when reading food labels? Yes, there. Only one thing they have to understand is that carbohydrate, the carb, the corn syrup, the fructose, every food item which have O's in the last, the suffix of any food item is sugar, sucrose, maple syrup, honey, everything has carbohydrate. So they should try to avoid the food products which are high in fructose, sodium benzoate, and sodium glucose, MSG, that we find in most of the junk foods that are being sold in the market. Okay. So before we continue further, for our viewers, I have some information. If you're serious about diabetes management and diet, you're eager to connect with like-minded people, join our supportive communities of diabetes and diet. Simply drop a message in the chat saying I'm in, and we'll make sure that you get an invitation. Or you can find the links to these communities in the bio. Yeah. So moving on. What role do portion sizes play in interpreting food labels for diabetes management? And how can individuals avoid overconsumption? Overconsumption can be controlled if we control
our purchasing capacity. Okay, this is the first Thursday. Tomorrow is the first weekend of the new year 2020. So you, me, and everyone will go for grocery purchasing, right? So वहाँ पे Right. आप buy one get one, okay? तो बिस्किट का पैकेट होगा, भुजिया, नूडल्स का पैकेट होगा, ब्राउन राइस का पैकेट होगा, ब्राउन ब्रेड होगा, ओके? तो वो क्या है? बाय वन गेट वन फ्री. तो एक कार्बोहाइड्रेट हम एक बिस्किट खाने वाले हैं, उसके खा के लेके आने वाले हैं. तो अगर इफ वी बाय प्रोडक्ट एंड वी विल ईट राइट थिंग, राइट? So my suggestion is don't fall prey to buying a family pack. You should buy small quantity. हम थोड़ा कम लेंगे, हम परचेज करेंगे, स्टोरेज में कम रहेगा, तो we will eat कम. So that is one. Secondly, कुछ मीठा हो जाए तो बड़ी चॉकलेट बार की जगह we should have bites. छोटा पैकेट लेके आओ, चॉकलेट भी छोटी लेके आओ, पूरा ड्राई फ्रूट का मिक्स्ड वाला पैकेट मत लेके, ओनली बादाम लेके आओ, खजूर मत खाओ. That should be considered. Okay, then you should not buy the triggering food item. For example, अभी वीकेंड है तो आइसक्रीम होनी चाहिए. आइसक्रीम का लिटरल मीनिंग क्या है? आइस या एंड क्रीम या मलाई. तो क्रीम एंड आइस को मिला आइसक्रीम. बाय टू इतना सारा हर्शीज का सिर्फ ब्राउन कलर का, पिंक कलर का, फिर उसके ऊपर थोड़ा सा टूटी फ्रूटी. तो वो व्हाट आर वी डूइंग? वी आर लोडिंग द कार्बोहाइड्रेट्स. So we should avoid those things. Then instead of eating straight from the packet, और पैकेट नहीं, उसमें से एक ही लो एंड उसको अपनी प्लेट में सर्व करो. दैट ईट बाइट. सो दिस इज माय मेथड दैट वी शुड नॉट ईट स्ट्रेट फ्रॉम द पैकेट. राइट. सो पोर्शन साइजेस जो होते हैं उसको देख के कैसे समझ सकते हैं कि कैसे, मतलब उसके बेसिस पे कैसे ओवर कंजम्पशन अवॉइड कर सकते हैं? आप एक फॉर एग्जाम्पल, जस्ट एन एग्जाम्पल, आप एक बिस्किट खाते हैं which says as the serving size of 8 serving size, the serving size of 8. That means आप उसको आकार खाइए, एक एक बिस्किट निकाल खाइए instead of eating all the 8 biscuits, right? There's use teaspoon, not the tablespoon. Okay, वो 100 ग्राम का तो एक आइसक्रीम का टब लेके आ रहे हैं, उसको 10 टाइम्स में खाओ ना. Why to eat 5 चम्मच में खाए एंड खत्म. तो दैट इज, हम बोलते हैं यू कैन हैव 1 डे. एक डे नहीं खाता है, यूजुअली 3-4 डेट उठा के खाते हैं. Same goes with grapes. हम खा सकते हैं grapes. Yes, you can eat grapes. Grapes मतलब 1 fist, यानी 5 बाय काउंट, नॉट बंच के बैठे हैं खाते जा रहे. Goes with berries. नाम तो सुना होगा, काइंड ऑफ थिंग कि हेल्दी है, एंटीऑक्सीडेंट रहते हैं, बट नो, इट हैज फ्रक्टोज which is so if you are a person who is living with diabetes or you are in the pre-diabetes spectrum, you should avoid fructose, sucrose, lactose as much. What we can do in that, we should start reading the food labels and understand what over there. Sorry, last part I didn't get. Your voice is actually breaking a bit. Oh, I'm so sorry. No, not an issue. It's okay. It's about what is written on the food pack. Fructose है, corn syrup है, maple syrup है, dextrose है, fruit alcohol है. What is there? All sugar. वो free है. That doesn't mean कि उसके अंदर बिल्कुल fat नहीं है. Sugar free, that doesn't mean कि बिल्कुल sugar नहीं है. We should start reading food labels and start mindful eating. Okay. Yeah. So are there any common misconceptions about food labels that people with diabetes should be aware of specifically? Many, for example, light, right? Light जो लग रही है वो light नहीं, light. हाँ. तो ममरा है, डायबिटिक ममरा है, डायबिटिक खाखा है, डायबिटिक च्यवनप्राश है. अरे पैकेट पलट देखो, you will come to know the main ingredient is sugar, wheat,
रागी है, इंटरनेशनल मिलेट है, रागी तो है, but रागी है, it's again carbohydrate, right? Right. So light है, it's not healthy for you, for your, okay? Then comes calorie free. Calorie free means what? Nothing. It's just क्योंकि कोई भी food item only provide you certain amount of calorie. Okay. Then coming to it is fat. All these are kind of okay. Then one. डॉक्टर स्वाति फिर से ब्रेक कर रहा है, आवाज बहुत ज्यादा ब्रेक हो रहा है. You can, I think you can move your phone a bit, और like वैसे कुछ कर सकते हैं तो थोड़ा मुझे लग रहा है उसका स्पीकर ब्लॉक हो रहा होगा, इस वजह से वॉइस ब्रेक हो रही होगी. बिकॉज योर वीडियो इज फाइन. ओके, हेलो. हाँ जी, हाँ जी. Yeah. So these all are the things we should consider. Then coming to the sugar content. Less sugar content means it should have very less amount of sugar as the main ingredient of the food product. Then whether it has a vegan wala hai, vegetarian hai, non-vegetarian, all those stuff should be understandable. And we should know कि वो serving size क्या है. Main thing is serving size. Serving size को आप पकड़ के चलेंगे तो you will come to know कि ये पैकेट मुझे कितने दिन में खत्म करना है. And you should start sharing. खुद के लिए खरीदा but बांटो सब में. Okay. So एक तो आपने कुछ प्रैक्टिकल टिप्स ऑलरेडी थ्रू आउट योर लाइक डिस्कशन आपने दिया है. उसके अलावा डू यू हैव एनी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स ऑफ हाउ पीपल विद डायबिटीज कैन यूज फूड लेबल्स टू प्लान बैलेंस्ड एंड हेल्दी मील्स? Balanced and healthy meal is a 360-degree spectrum. One has to be physically healthy, mentally healthy, and their eating habits should be healthy. Healthy in terms of controlling their macronutrients. Protein ko if we try to increase bit by bit in our diet, then carbohydrate automatically control mein aayega. Okay? They should eat more protein and try to minimize carbohydrate as much as possible. तो अभी उसके लिए क्या करने का, मार्केट में गए, ब्राउन राइस दिखा, लेके आए कि हेल्दी है. ब्राउन राइस मतलब राइस तो है, क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, कम होनी चाहिए. सेम गोज विद ब्राउन ब्रेड. देन ओट मील. देन कैलोग्स नहीं मीन्स कॉर्नफ्लेक्स आप लेके आ रहे हो, बट ऑल आर कार्ब्स. तो आपको जो भी खाना है कार्बोहाइड्रेट वाइज आप उसको लेस क्वांटिटी में खाएंगे, देन यू विल बी हैविंग मोर healthy and balanced diet kind of thing. Then try to incorporate as much vegetables as you can. उसमें भी non-starchy vegetables should be in your focus, like green leafy vegetables, other vegetables. अभी green beans आ रही हैं, variety of beans are there in market. So instead of eating bhindi roj ka roj, one should try to have different types of beans. Then we are having matar, soyabean, choda. Every bean is there in the market because it's winter season. Right. So soup बनाइए, खिचड़ी बनाइए, whatever. Weekend है तो पार्टी में थोड़ा कार्बोहाइड्रेट को कम फोकस में लाइए. Eat before your parties so that you can enjoy physically and mentally, not just by eating. Yeah. Right. So बीच में actually उसमें कमेंट्स में बार बार ये आ रहा था that people were unable to understand, voice break हो रहा था. तो can I repeat one of the questions again? Yeah, if sure. it's fine with you. So portion sizes और over consumption को लेके जब हम बात कर रहे थे, तो could you please, so basically what role do portion sizes play in interpreting food labels, and how can someone avoid overconsumption? Okay. See, I am a 90s kid. हमारे टाइम का एक एड था, no one can eat just one, right? तो वो टाइम से I was not the food and nutrition student, but वो टाइम पे हमको सिखाया गया था कि एक से पेट नहीं भरता है. But now I am into this profession, so I am telling you, आप टेस्ट के लिए खाइए, not for your waste. आप जितना टेस्टी खाएंगे,
आपकी वेस्ट उतना उतना बढ़ती जाएगी. So it's better to have healthy food items in your pantry. So जब आप ये वीकेंड पे ग्रोसरी शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, try to start reading, make a habit to read all the food labels. एक बार में कुछ समझ नहीं आएगा, but देखिए कि how many types of sugar items, इसके पीछे AL है, OL है, OSE है, ये 3 चीज आपको काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड कर रही है. सो दैट वी शुड ट्राई टू मग अप कि ये 3 चीज जितनी ज्यादा इंग्रेडिएंट इसमें होंगी उतना ज्यादा मेरे पास कार्बोहाइड्रेट वाला पैकेट आ रहा है. भले लिखा है कि फाइबर रिच है, बट एक्चुअली OS रिच है, सुक्रोज रिच है. ओके, सो यही क्वेश्चंस थे मेरे पास. तो अब मैं एक बार कमेंट्स में देख लेती हूँ. एक क्वेश्चन है, इज स्टेविया गुड फॉर डायबिटिक्स? ओके, दिस इज अ ऑल्टरनेटिव, मतलब शुगर का ऑल्टरनेटिव है. तो आपको टेस्ट के लिए लेना है. दैट मीन्स अगर आप दिन में 3 बार चाय पी रहे हो, कॉफी पी रहे हो, उसमें दूध भी ले रहे हो, तो बाय काउंट ऑफ 2 या 3 पिल आप उसकी यूज कर सकते हो. बट स्टीविया है, हेल्दी है, ऐसा करके 6 पिल एक दिन में नहीं, बिकॉज इट इज अगेन ओवर कंजम्पशन विथ, मतलब विच गेटिंग इनटू योर बॉडी, एंड इट इज अ काइंड ऑफ you can say it's not toxic chemical, but yes it is a chemical because वो प्लांट में बना है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में बना है. आप घर में स्टीविया का पौधा खुद उगा रहे हो, ऑर्गेनिक है, खुद के उगाया हुआ है, तो आप जितनी पत्ती डालनी है डालो. बट वो पिल फॉर्म में आया, मतलब वो प्रोसेसिंग के थ्रू आया है. तो वी शुड अंडरस्टैंड कि वो भले लिखा है स्टीविया है, शुगर ऑल्टरनेटिव है, बट इट इज अगेन ओवर कंजम्पशन होएगा. तो अभी नहीं तो बाद में इट इज गोइंग टू हार्म अस. Okay, so one of the question, this is one question which I get like always, like almost every live session is, सी बकथॉर्न कैसे हेल्प कर सकता है डायबिटीज में? तो अपन चलते हैं वहां पे, खुद से ऐसा ऐसा करके निकालते हैं, उसकी प्रोसेसिंग होते हुए अपनी आंखों से देखते हैं. दैट वी विल कम टू नो कि हाँ कितना हेल्पफुल है. मेरी दादी ने, मेरी नानी ने ये सब नहीं सुना था, एंड दे लिव्ड 80 अच्छे से. क्यों? बिकॉज दे वर फिजिकली एक्टिव, दे वर मेंटली एक्टिव, दे वर यूज्ड टू रीड न्यूज़पेपर्स लाइन बाय लाइन, इंग्लिश का हो, हिंदी का हो. उसके अंदर सुडोकू अभी आया है, बट पहले बूझो तो जाने आता था. दैट मीन्स उनका मेंटल लेवल, दे वर एंगेज्ड एंड दे वर डूइंग दैट घाटी थिंग. Okay? So physically they were active, they were building their muscle. What is this? Stone grinding जो है, it is a kind of muscle building activity ना. So see, वो सबके अपने अपने हैं, but quantity and quality जो है वो मैटर करेगा, because वो again plant manufactured thing है. तो उसकी quantity आपकी other food ingredients जो already आपके साथ हैं उसके साथ मैच करके ही then I can advise कि हाँ भाई आप लीजिए. So basically आप अपनी तरफ से कोई भी एक्सपेरिमेंट करने, if you are a diabetic, please don't go for any experimentation on your end. Consult a dietitian, consult your diabetologist, and then figure out a diet which helps you. So यही था मेरे पास, और क्वेश्चंस भी इतने ही थे. Thank you very much for this informative session, Dr. Swati. Yeah. In the last, I just want to add one thing. कि अभी विंटर है, गजक तो खाना पड़ेगा, गुड़ तो है, राइट? बट अभी वो वाली ठंडी नहीं है जब हम लोग भाग भाग के स्कूल जाते थे. राइट. अभी we all are sitting in our homes or in our offices and we are commuting through buses, autos, Ola, Uber, cabs या metro, whatever. Our physical activities is decreased. So we are not just allowed to have पूरा 1 किलो गुड़ 1 महीने में खत्म करना है, या अभी सकरात आ रही है तो तिलपट्टी खानी ही है, बनाइए. There is nothing in eating less in quantity, but वो less once a week होना चाहिए. रोज less खाया, 1 चम्मच गाजर का हलवा खाया, that is not advisable. Right. So these are my take on this.
Thank you very much for your very in-depth information that you shared with us. And to our Yeah. viewers, thanks a ton for being a part of this live session. At Thip Media, we are dedicated to delivering expert health information for your well-informed choices. Please avoid unreliable health information and advice on social media. Follow the Health Indian Project on social media and WhatsApp for trusted health updates. Yeah. We get all the information from Dr. Swati Dave and medical experts like her. So you'll get very reliable information on our website. Remember, when you know better, you live better. Thank you so much, Dr. Swati. Yeah. And thank you, everyone. Yeah. Bye. Good night. Thanks for having me. Bye. Thank you. Bye.